Division A, which is a part of the ACF group, manufactures only one type of product, a pit, which it sells to external customers and also to Division C, another member of the group. ACF Group's policy is that divisions have the freedom to set transfer price and choose their suppliers. The ACF Group uses residual income to assess divisional performance, and each year it sets each division a target residual income. The group's cost of capital is 12% a year. Can you tell me how is residual income calculated? Controllable profit minus notional interest on capital. Okay. Hema, is that formula correct? Yes, sir. Now, Division A has budgeted information for the coming year. Maximum capacity 1,50,000 bits. External sales 1,10,000 bits. External selling price $35 per bit. Variable cost $22 per bit. Fixed cost 10,80,000. Capital employed 32 lakh. Target residual income 1,80,000. Division C has found two other companies willing to supply bits. ठीक है. X could supply at $28 per bit, but only for annual orders in excess of 50,000 bits. Z could supply at $33 per bit for any quantity ordered. Division C provisionally requests a quotation for 60,000 bits from Division A for the coming year. Calculate the transfer price per bit that Division A should quote in order to meet its residual income target. Calculate the two prices Division A would have to quote to Division C if it became group policy to quote transfer prices based on opportunity cost. ठीक है. Division A का they have asked to calculate the transfer price per bit that Division A should quote in order to meet the residual income target. ठीक है. Now, X could supply at, so there is an external supplier also, but let's focus on Division A. Division A का residual income target है 1,80,000. ठीक है. Right, and residual income is controllable profit minus notional cost. First of all, your capital employed is 32 lakh. Uska 12%, which is your group cost of capital. Notional cost of capital is 3,84,000. Residual income is controllable profit minus notional cost. So target 1,80,000 is profit minus notional cost of 384. तो target profit कितना हो जाएगा? 1,80,000 plus 3,84,000, which is 5,64,000. Make sense? Ishan? Yes, sir. Okay. They are asking how much should my transfer price be so that I get my residual income target. मुझे अगर residual income 180 चाहिए तो target profit should be 5,64. Fixed cost कितना है? 10,80,000. Do you agree that contribution minus fixed cost gives you profit? Right? Sir. So contribution निकालना होगा तो target profit plus fixed cost अगर आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपका target contribution. Is that right? Yes, sir. है ना. तो यहाँ पे टारगेट कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? 5,64,000 विच इज द टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट ऑफ 10,80,000 विच इज 16,44,000. राइट. ओके. Yes. नाउ contribution from external sale, how much do you expect contribution from external sale? देखो तो observe this data and tell me कहाँ से आ रहा है ये. Yes, sir. 35 minus 22. Action price minus residual cost. Okay. So 35 minus 22 करके, right? Yes, sir. Now, sale that can be done externally. See, 1,50,000 is the maximum capacity of the division. How much external sales are possible right now? Division C provisionally requests a quotation for 60,000 bits. अगर 60,000 external sale है तो internal sale कितना करना पड़ेगा? 90,000 units should be the internal. मतलब 60,000 अगर internal transfer है तो external sale will be 90,000. Do you agree? Yes, sir. Right. Yes. So
अगर इंटरनल सेल 60 है, इंटरनल ट्रांसफर 60 है, एक्सटर्नल ट्रांसफर 90,000 है, सो व्हाट इज द टोटल कंट्रीब्यूशन? 90,000 इंटू 13, 11,70,000 का कंट्रीब्यूशन आपको कहां से मिलेगा? 11,70,000 का कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा एक्सटर्नल सेल्स से। डू यू अग्री? यस सर। तो इंटर टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए टू गेट दैट रेसिडुअल इनकम। यू नीड टारगेट कंट्रीब्यूशन ऑफ 16,44,000, जिसमें से 11,70,000 आपको कहां से मिलेगा? 11,70,000 आपको मिलेगा फ्रॉम एक्सटर्नल सेल। सो हाउ मच शुड यू गेट फ्रॉम इंटरनल ट्रांसफर? 4,74,000, राइट? ओके। कैसे आया 474? 1644 माइनस 1170, Yes, right? And how many units are going for internal transfer? 4,74,000. So how many units? How much will be the target contribution per unit? 4,74,000 upon 60,000. कितना आ जाएगा? 7.9 आ जाएगा, right? yes, sir. Okay. Then ट्रांसफर प्राइस इज 22 प्लस 7.9 विच इज 20। अब देखो, वेरिएबल कॉस्ट है 22। वेरिएबल कॉस्ट यू विल हैव टू रिकवर फ्रॉम द अदर कंपनी, sorry, from the other department, because see, variable cost is incurred each time a product is produced, तो उतना तो आपको minimum recover करना पड़ेगा। along with that you have a target contribution to earn of 7.9 per unit। तो डिवीजन ए को कितना ट्रांसफर प्राइस चाहिए? डिवीजन ए would expect a transfer price of 29.9 in order to meet the residual income target। do you agree? Yes, sir. यस सर। देख लो एक बार, go through the whole process once। read the question, ठीक है? Tell me when you want me to scroll up, down, whatever it is। सर इसमें लाइक उसका कोई इफेक्ट नहीं लेंगे, जैसे कि अगर हम एक्सटर्नल सेल्स जो कि हमारी 1,10,000 है, बट हम सिर्फ 90,000 कर रहे हैं बिकॉज 60,000, तो फिर हाँ, लॉस कंट्रीब्यूशन का मतलब कोई इफेक्ट तो नहीं लेंगे। हमने वहां पे देखो, एक्सटर्नल जब हम 60,000 कर रहे हैं, सॉरी, इंटरनल जब 60,000 कर रहे हैं, सो दैट देर इज अ लॉस, राइट? एंड दैट लॉस वी आर ट्राइंग टू रिकवर हियर। अगर हम 1,10,000 एक्सटर्नल सेल करते तो 1,10,000 इंटू 13, 14,30,000 आता। ये 11,70,000 आ रहा है, मतलब कम कंट्रीब्यूशन आया ना, तो प्रेशर बढ़ गया ना टू रिकवर फ्रॉम द इंटरनल डिपार्टमेंट, यस सर। राइट? ठीक है, यस सर। गायत्री, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? No, sir, it is clear.
Okay. Let's look at the second part. Calculate the two prices division A would have to quote to division C if it became group policy to quote transfer prices based on opportunity cost. Now, what is opportunity cost and how can so if they are saying here you have to build the transfer pricing policy based on opportunity cost, तो कैसे करना है उसको? Think about the approach. बताइए क्या करेंगे आप यहाँ पे? सर आई थिंक जो 40,000 यूनिट्स हम जो कम बेच रहे हैं, हम्म 11 आई थिंक 30,000, तो 30,000 यूनिट्स का वो कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, लाइक हमें कितना अर्न कर सकते थे जो कि हम नहीं कर पा रहे मे बी, और उसको पर यूनिट में निकाल के आई थिंक कॉस्ट में ऐड कर लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट में जो हम चार्ज करेंगे मे बी टू डिवीजन। ओके। हेमा, व्हाट डू यू थिंक? Same thing, sir. We will take the difference of the unit and check on the cost. Quotations are given. I think the same thing. सर इसमें टू प्राइसेस का क्या मतलब है, कैलकुलेट टू प्राइसेस? So they are saying two prices matlab one when the supply is 11, sorry, 1,10,000, other when the external transfer is 90,000. ठीक है? If 1,10,000 units are sold externally, what will be internal transfer price? If 90,000 units are sold externally, what will be internal transfer price? ठीक है, कैसे आएगा ये? If you are planning to sell 1,10,000 units externally, ठीक है, that means आपका maximum external demand है 1,10,000, ठीक है, that means max external demand of 1,10,000 gets fulfilled, correct? यस। Max external demand of 1,10,000 gets fulfilled. So, not losing out on an opportunity to earn, है ना, not losing out on an opportunity to earn. पूरा पूरा maximum contribution that you could have gotten, you are getting that. So, transfer price will be वेरिएबल कॉस्ट। variable cost of 22 per unit. ठीक है. If 90,000 units are sold externally, what will be the internal transfer price? ठीक है. So, you will lose out on an opportunity to earn a you will lose out on an opportunity to earn contribution from external sale to achieve the same level of contribution. What you should do, you must sell 20,000 units to division C at 35. आप 35 में बेचेंगे, when you sell at 35, you will be able to the same price that you sell it to external customers, you will be able to recover the entire price. ठीक है, आप पूरा का पूरा अमाउंट यू वुड बी एबल टू रिकवर. ठीक है, एंड 40,000 यूनिट्स you can transfer at 22, which is equal to variable cost. Make sense? Yes.
यस 60,000 सर। यूनिट्स यू आर ट्रांसफरिंग, तो इंटरनली जो है 20,000 यूनिट्स को आप ट्रांसफर करो एट 35, 40,000 यूनिट्स को आप ट्रांसफर करो एट 22, है ना? सर आई थॉट कि like इसमें एक ही मतलब हमें प्राइस कोट करना पड़ेगा, नहीं, मतलब ओवरऑल नहीं, नहीं, 90। नहीं, यू कैन हैव इट दिस वे। ओके। ठीक है, एक बार देख लो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज दैट? Discuss with supporting calculations the impact of the group's current and proposed transfer pricing policies on the profits of division A and C and on group profit. ये कैसे करेंगे? Impact of the current and proposed transfer pricing policies. How do you think we should do it? Current transfer pricing policy. What is the current transfer pricing policy? कुछ लिखा है? See, what is Division C's objective? Division C's objective is to maximize its residual income in order to meet the residual income target, है ना? So उसके लिए Division C क्या करेगा? Division C will try to find out who is giving the material to division at the least possible price. C would prefer to buy from them, either from an external supplier X or internally from division A, right? So how do we tackle? Division C has found two suppliers. X could supply at 28 per bit, but only for annual orders in excess of 50,000 bits. Z could supply at 33 per bit for any quantity ordered. कैसे डिसाइड करेंगे? Which one to go for? If you take from C, okay, if division C accepts it from division from the external party X. Now, right now, division A sells 1,10,000 units externally. So it transfers only 40,000 units internally. That means division C which needs 60,000 units will have to decide between buying from A and then from X. See, if it buys 40,000 units from from A, then it will have to buy 20,000 units from X. Okay. If it buys 40,000 units from A, then it will have to buy 20,000 units from X. But in that case, it will not be able to get the benefit of a
डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 28, बिकॉज एक्स डिविजन का क्या है, ओनली इफ द एनुअल ऑर्डर्स आर इन एक्सेस ऑफ 50,000 बिट्स। ठीक है, इफ सी बाइज ऑल 60,000 यूनिट्स फ्रॉम एक्स, ठीक है, it can get these at 28 per unit. ठीक है, that means division A does not have to transfer anything to division C. ठीक है, division A does not have to transfer anything to division C, so it does not have to worry about losing out on earning contribution on these 20,000 units, है ना। पहले दैट वुड हैव बीन अ कंसर्न कि यार 20,000 यूनिट्स में मेरा कॉन्ट्रीब्यू, आई वुड हैव लॉस्ट आउट ऑन अर्निंग दैट कॉन्ट्रीब्यूशन, अभी वो इशू नहीं है। सो डिविजन ए कैन सेल 20,000 यूनिट्स, कैन सेल ऑल 1,20,000 units externally and will not have to transfer 20,000 units to C. So it so by not transferring to division C, it is saving, it is able to earn a contribution of 20,000 into how much? 13, 2,60,000, and cost for buying from X, 60,000 into 28. How much is it? 1,68,000. 1,68,000. 1 lakh 68. 68. Okay. Sorry, Ab sir. cost, 1680. One more zero, sir. Sir. okay. Cost of buying from A कितना होगा? 60,000 into 22. How much is it? 1,32, sorry, 13,20,000. Mm. So buying from X leads to extra cost of 16,80,000 minus 3 13,20,000. lakh. कितना? 3,60,000. 3,60,000. So extra cost 3,60,000. Contribution earned 2,60,000. So net cost is 1 lakh. Do you agree? Yes, sir. सर ये कहाँ पे लिखा है कि लाइक डिवीजन सी को 60,000 यूनिट्स चाहिए? क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखो, डिविजन सी को कितना चाहिए? कोटेशन फॉर 60,000 यूनिट्स है ना। सर वो तो लाइक ए पार्ट का होगा ना, मतलब ये तो बी पार्ट है। बट यूनिट्स तो उतने ही चाहिए ना, यूनिट्स थोड़ी बदलेंगे। सर यूनिट्स तो आई थिंक उतने चाहिए होंगे ना, लाइक 150 माइनस 110, नहीं मतलब ना, उतने 40,000। नहीं, वो तो ऐसे थोड़ी इंटरप्रेट कर सकते हो आप। ये डिवीजन ए का मैक्सिमम कैपेसिटी है, मैक्सिमम एक्सटर्नल सेल्स पॉसिबल है 1,10,000, तो डिवीजन ए कैन ट्रांसफर 40,000 यूनिट्स टू डिवीजन सी, वो डिवीजन सी का डिमांड थोड़ी है ना।
डिवीजन सी का डिमांड तो 60,000 है। ओके। ठीक है, एक बार देखो इसको अच्छे से, करंट ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी। Sir, completed, sir. ठीक है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रपोज्ड ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज्ड ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी, व्हाट इज दैट? इफ डिविजन ए वर टू सेट ट्रांसफर प्राइसेस बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, द इफेक्ट ऑन इट्स डिविजनल प्रॉफिट क्या होगा, है ना? सो लेट्स लुक एट बोथ द डिविजन्स। कैसे करेंगे इसको अप्रोच? और उन्होंने क्या पूछा है? डिस्कस विद सपोर्टिंग कैलकुलेशंस द इंपैक्ट ऑफ ग्रुप्स करंट एंड प्रपोज ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसीज। ये क्वेश्चन इसी का कंटिन्यूएशन है ना, इसीलिए तो हम 60,000 यूनिट्स यूज कर रहे हैं। कहीं और जाने का जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में ही लिखा है सपोर्टिंग कैलकुलेशंस विथ रिस्पेक्ट टू दैट प्रपोज्ड ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी। ठीक है, अब ये प्रपोज ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी जो है वो क्या है? ये वाला 90,000 units are sold externally, what will be the internal transfer price, है ना? Internal transfer price 40,000 units can be transferred at 22, है ना? And 60,000 units will be transferred at 35, right? So current transfer pricing policy में transfer price is 29.9, प्रपोज ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी में कुछ यूनिट्स के लिए 35 है, कुछ यूनिट्स के लिए 22 है, करेक्ट? Yes, sir. Current policy transfer price is 29.9. In proposed policy, division A will transfer 20,000 units at 35 per unit. ठीक है, so
increase in profit will be 20,000 into 35 minus 29.9 कितना होगा? 5.1. And in proposed policy, Division A will transfer 40,000 units at 22. So, loss suffered will be 40,000 into 29.9 minus 22. कितना होता है बताइए? 3,16,000. 3,16,000. So, net loss suffered by A, 3,16,000 minus 1,02,000, 2,40,000. 2,14,000. And division C, think about it from division C's perspective. Division C क्या करेगा? It is purchasing from division A at 22. है ना? 40,000 bits it is purchasing from division A at 22. Second option है, it will purchase 20,000 bits from outside. It can purchase it from outside also. Or it can purchase 60,000 bits from department from company X. Division C can purchase 60,000 units from X. 60,000 into 28 कितना हो जाएगा? 16,80,000. Or can purchase 40,000 from A and 20,000 from Z. वो भी एक ऑप्शन है इसके पास, है ना? X could supply at 28 per bit, Z could supply at 33 per bit for any quantity ordered. So if you are buying for 40,000 units from division A, then 20,000 you are going to buy from division Z. Up division X I am not considering because they have told here if the order size is greater than 50,000, then division X will give you at 28. But if the order size is less than 50,000, division का कोई price has not been quoted. ठीक है? So cost will be 40,000 into how much? 22 plus 20,000 into 33. 15,40,000. 15,40,000. ठीक है? So additional cost or other cost saved कितना होगा? Cost saved 1,40,000. 16,80,000 minus 15,40,000, 1,40,000. So net loss cost मतलब you can evaluate the impact. ठीक है? एक बार देख लो. ठीक है? This is one of the older question types. ठीक है?
Just one question. In the current transfer pricing policy, how do we understand like what policy we have written here? Like Division C can purchase 60. This calculations we have done here. No? Why can't we opt this only in this current transfer pricing policy? This one. Yes. So we had two options, right? Either we could buy all from X, or if we don't buy from X, then we have to buy 40,000 internally, and remaining 20,000 would have to be taken from division Z. Why have I not involved division X in this conversation? Is because at this point in time, we don't know division X ka transfer price if less than 50,000 units are ordered. है ना? ठीक है? Okay. Okay.